How are you all? I hope you all are doing well. चलो start करेंगे. So we are already done with our 4 standards in which series? 700 series. Name the standards and the number, please. First one is, which is the first one? 700. And then 701 talks about CAM, and 700 talks about reporting on financial statements, expression of opinion and reporting in financial statement. What is 705? Modifications in the independent auditor's report. And what is 706? I hope now you know the clear bifurcation between the EMP, OMP as well as what? CAM, right? Now today we are going to understand 710, but before that, are we done with EMP, OMP yesterday fully? Right or not? So today we have to start with the SS 710. What is the name of the standard? That is called comparative information. There are 3 things written in the standard. Try to understand these 3 things. What is the first thing written, everyone? What is the first word? Comparative information. Then corresponding figures and what? If you remember 510, then in that case it will be very easy for you to consume 710. Because 510 mein we did one thing. What is that one thing? Initial audit engagements. Which balance is? Opening balance. Do you remember that I told you there are 2 issues in 510? What if the last year auditor was the same auditor or different auditor? Different. Issue number 2, last year audit has not taken place. Actually, problem comes in our section number 139 subsection 2. What does section number 139 subsection 2 of the Companies Act says? Talks about rotation. Right? What do you mean by rotation of an auditor? If you are a sole proprietor auditor, you cannot work in a company as an auditor for more than continuous period of 5 years. Or if you are a पार्टनरशिप फॉर्म और LLP 2 terms of 5 years. ये हमने सबने लॉ में पढ़ा हुआ है, ठीक है. ऑडिटिंग में तो डेफिनेटली वी हैव टू डू दैट अगेन इन अ मोर एग्जॉस्टिव मैनर इन अवर चैप्टर कॉल्ड कंपनी ऑडिट, विच मोस्टली विल बी द नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर दिस, ठीक है. अभी here the thing is they are talking about the comparative information. You all know that every company prepares a financial statement with the help of schedule 3. Am I correct? Achha, schedule 3, when we talk about the schedule 3, is it a T-shaped balance sheet and P&L or is it a vertical? And 1 year information or 2 years? What are the 2 years information? Current year. There comes the need of this standard. What is the word written? Comparative information. Schedule 3 में 2 साल की information क्यों होती है? Why there is a 2 years information given in schedule 3? So that when the user is watching or when he is seeing the financial statement, he can analyze ki how this year's financials are different from what? Last year. Like say for example, if the last year profit was 35 crores and this year's profit, net profit opposite to that, current year, this is last year and current year is written 45 crores, will they be happy or unhappy? So company ka profitability is increasing or decreasing? This is the reason we give the 1 year information or 2 years information, 2 years. उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. एंड व्हाट इज द सेकंड वर्ड एवरीवन? कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, टेल मी, इफ द लास्ट ईयर डेटर्स आर रिटन समवेयर ऑपोजिट टू दैट करंट ईयर डेटर्स आल्सो विल बी रिटन और नॉट, उसे बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स. व्हिच फिगर्स? इमेजिन करो कि देयर इज अ शेड्यूल 3 एंड आई एम राइटिंग द डेटर्स ऑफ द करंट ईयर हियर एंड द लास्ट ईयर डेटर्स हियर. विल इट बी एप्रोप्रिएट टू रीड financial statement in this way or it should be opposite to each other? That is called corresponding figures. That is called which figures? Corresponding. And ultimately all these 2 things put together makes our financial statement as which statement? Comparative financial statement. इससे क्या होता है? इससे अपने को रेशियो एनालिसिस करने में इजी हो जाता है. रेशियो एनालिसिस, दैट इज वन ऑफ द चैप्टर इन योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. उसमें अपने को एनालिसिस करने में इजी हो जाता है. जैसे से फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर डेटर्स वर 45 करोड़ and this year's debtors are 75 crores. What does that mean? Debtors are increasing. That is a generalized statement. What does that mean? I'm saying credit sales are increasing or decreasing. But when you see the sales, देखो अब मैं तुम्हें कनेक्शन बताता हूं.
35 crores से 75 crores when it was increased. This is current year and this is what? Last year. You are saying that sales have been increased on cash basis or credit basis. But when I actually go to the P&L trading में जाता हूं तो वहां पे sales were doubled. Sales were what? Doubled. Rather you can say tripled. Sales were what? Tripled. Means 100 crore का sales, total 100 crore का sale got what? 300 crore. अब बताओ, what is the analysis? According to the increase in the sales, whether the debtors increased that much, it means company is doing good. They are recovering the more money from whom? Debtors. क्योंकि अगर 100 में 35 crores है last year, तो it means according to 300 crores, there should be what? 105 crores as a debtor of this year, which is nothing but reduced to how many? What does that mean? Collection from the debtor is lower or higher? इसे बोलते हैं analysis करना. It means company is doing good. Company is focusing more on what? Recovery. Their bad debt chances will be lower. It means company is true and fair. समझ में आ रहा है? So never ever be dependent upon the one figure. So one figure if correlated with another figure, this is called analysis. इसीलिए अपने को एक चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, दैट इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस. करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो, then debt by equity ratio, stock turnover ratios, activity ratios, profitability ratios, solvency ratios, liquidity ratios. So many types of ratios we are going to do. Like तुम्हारा एक चैप्टर है ना कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ना वो पूरा. सेम इज अ केस विद द रेशियो एनालिसिस, कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर. So there you will understand how the chartered accountant looks at the financial statement and how the normal person looks at the financial statement. What you give me the answer is the normal answer. Sir, 35 से 75 हो गया, इसका मतलब debtors have been increased. Actually, when compared to sale, debtors have been increased or decreased? Decreased. This is called analysis. This is what do you mean by what? Comparative financial statement. Now the question is, sir, what is the auditor's role in that? Auditor's role is very simple, everyone. The role is, say for example, problem comes when? Problem, look at the problem, look at the root of this standard first. Say for example, there is one auditor who was appointed in the year, there was one auditor who was appointed in the year 2015-16 का AGM हुआ था. When the AGM has happened, it was happened on, say for example, 30th September 2016, and Mr. X was appointed as an auditor for the next how many years? 5 years. अब तो मुझे बताओ, he will be holding the office as an auditor till which AGM? For the next how many years? 5. तो इसका मतलब 17, 18, 19, 20 up to 30th September 2020. नहीं, sorry, ये तो 1 year हो, 21. तो up to 30th September 2021, his how many years will be completed? 5 years. तो मतलब 5 years तक Mr. X has done the audit of the ABC Limited Company. Now 22 का जब AGM हुआ, they appointed Mr. Y as an auditor. Who got appointed? Obviously 5 years के बाद rotation has to take place, another auditor will come. Now problem came when, now when Mr. Y is doing the audit of which financial year? ध्यान से बोलना. Think logically and tell me he is doing the, देखो 15-16 को audit Mr. X has done, 16-17 को audit Mr. X has done, 17-18 भी Mr. X ने कर दिया, 18-19 भी कर दिया, and 20-21 financial year भी हो गया. It means I have been appointed for which financial year? 21-22. So Y has been appointed for the financial year 21-22. It means from 21-22 onwards for the next what? 5 years. Who is the auditor? और Mr. X का क्या चल रहा है? Cooling period. उनको कौन सा पीरियड चल रहा है? कूलिंग पीरियड. 5 years Mr. Y will do the audit. अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं. Now Mr. X has been appointed as an auditor of 21-22 financial year, but when he is going to issue an audit report, he is going to issue the audit report on financial statements. Am I correct? Financial statement में 1 year is coming or 2 years are coming. इसका मतलब financial statement में 21-20 will also come as well as what? 20-21. Last year भी आएगा, करंट ईयर भी आएगा. बट लास्ट ईयर का ऑडिट किसने किया और करंट ईयर का? लेकिन यू आर रिपोर्टिंग ऑन व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड 1 year और 2 years. इसका मतलब यू आर इनडायरेक्टली टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम? प्रीवियस ईयर ऑडिटर. डिड यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम?
Suppose the last year auditor has not done the work properly. Is that affecting my current year or not? That is what this whole standard is all about. समझ में आ रहा? So ये problem कब आती है? When the rotation takes place ना, then 710 actually comes into the use. Otherwise 710 has no relevance throughout the how many years? 5 years. 6th year में आके 710 हमेशा आएगा. Why? Because rotation of the auditor takes place. क्योंकि स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि ऑडिटर ऑलवेज एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर व्हिच शेड्यूल? शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 सेज दैट कि यू हैव टू गिव हाउ मेनी इयर्स? 2 years. तो इवन दो आई एम द ऑडिटर ऑफ द करंट ईयर, बट इनडायरेक्टली आई एम एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन फॉर व्हाट? 2 years. क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 साल है. इसका मतलब व्हाट इज माय मेजर कंसर्न कि वेदर द लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंसेस, whether the last year ka closing balances have been properly carried forward as current year ka which balances? Opening balance. और imagine करो if the last year auditor has not done the audit properly, is it going to affect your current year audit? Yes. तो मतलब उसका problem मैं क्यों भुगतूं? Why should I suffer when that duffer has done the audit in a different manner? Am I correct or not? और ऐसा situation होता है. Sometimes it happens. Sometimes क्या होता है, while doing the current year audit, you came across some evidences which are telling you that कि Rohit last year auditor should have given modified report. Which report? But that mad fellow has given what? Unmodified report. अब इसका मतलब my homework got reduced or increased? Increased. मेरे को last year का भी consideration करना पड़ेगा. There comes the need of essay 710. Did you understand the idea behind 710? तो 710 में ये हो गया one problem. Second problem is last year audit has not taken place. What is the biggest problem? See, if the last year audit has taken place, I still have, there is a hope. I can go to the old auditor and tell him to issue the revised report or something can be happened. But what you will do if the last year audit has not taken place? When the last year audit has not taken place, what are the closing balances of last year? Audited or unaudited? It means current year ka opening balances are also what? Unaudited. And that is definitely going to impact my which year? Current year. Again problem. There again comes the need of which standard? 710. So did you understand the two problems? So what are the two problems basically we are facing in 710? If the last year auditor was the same auditor or different auditor? It will not come if the same auditor. क्योंकि last year अगर मैंने audit किया मैं अपने आप को defer थोड़ा बोलूंगा. सीधी सी बात है. ठीक है ना? But this comes exactly in the 6th year and the 11th year according to the requirements of rotation of an auditor. Is it clear everyone? And what is the second area where it is used? When the last year audit had happened or did not happen? Now, so what is your interpretation so far from the introduction of this standard which we have? मैंने तुम्हें day 1 से बोलते आ रहा हूं, standard है छोटे, they are very small standards, but उनका introduction is bigger than the content of the standard. अगर आप standard को समझ लोगे at the introduction stage only, 50% of your understanding gets over there itself only. But most important is you should know the reason why कि ये standard अपने portion में आया क्यों. That's the reason you might have seen that gradually कि whenever the standard starts, I first give you the introduction of the standard कि standard का purpose क्या है. What is the reason behind this standard, right or not? So you have to understand the spirit of the lawmaker before doing any kind of law. ठीक है? अब देखो यहां पे first of all you have to do the two definitions. What are the two things you have to understand? Point number 1 पढ़ो. What is the first one? देखो, this standard says that कि even though I am the auditor of financial statements and even though financial statement contains how many years, but you are indirectly responsible only for what? 1 year. क्योंकि last year का audit I did or I did not do. तो इसका मतलब यहां पे अपने को OMP EMP पैराग्राफ बहुत हेल्प करेगा. Which पैरा? क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि if the last year some problem has come, would I like to draw the attention of users? So when management has not disclosed anything and the auditor directly discloses, which para comes? OMP. And when I would like to draw the attention to something which the management has already disclosed, I would like to use EMP. तो ये स्टैंडर्ड में अपने को 706 is going to help a lot. Are you getting it? तो 710 is 50% based upon 706. That's how you have to do it in sequence manner.
तो अगर मैं तुम्हें कल ईएमपी ओएमपी नहीं करवाता, डायरेक्टली 710 करवाता, वुड इट हैव गॉन इनसाइड योर हेड? नो। ये तभी जाता है, तो यू हैव टू डू द स्टैंडर्ड्स एंड सीक्वेंस। अब पढ़ो, रीड द पॉइंट नंबर 1 केयरफुली। फॉर विच फिगर्स, corresponding figures, the auditor's opinion on financial statement refers or shall be what? Restricted to the which period only? तो भैया, just because you are an auditor of financial statement, just because 2 years information is coming, doesn't mean that I will make you held responsible for the wrong things of the which auditor? Previous audit. You are only and only responsible for current period. समझ में आ रहा है? But unfortunately, you are doing the audit of not 1 year. You are doing the audit of financial statements. So second point में क्या बोलता है auditor? Read the standard. What the second is saying? Auditor's opinion on financial statement refers to which period? Each period का मतलब क्या हुआ? Both the period. इसका मतलब whether I want or I don't want, I have to be very careful when it comes to my opening balances. Which balances? तो दो चीजें हो सकती है, आइदर ओपनिंग बैलेंसेस आर अनऑडिटेड। व्हाई अनऑडिटेड? लास्ट ईयर ऑडिट हैज नॉट टेकन प्लेस। और सेकंड थिंग, ओपनिंग बैलेंसेस वर ऑडिटेड बाय मी और समबडी एल्स। So these are the two issues we have to solve in this standard. Did you understand the point? So when it comes to corresponding figures, you are only and only responsible for current. But when it comes to comparative financial statement, you are responsible for what? Each period. ये याद रखना. ये आता है तुम्हें correct incorrect में आता है directly. कि briefly explain whether the statement is correct or incorrect with reasons. An auditor is responsible for both the year's corresponding figures. What is your answer? Correct or incorrect? Is only responsible for the corresponding figures of what? Current year only. But will your answer change if I am talking about financial statements instead of current year corresponding figures? Yes. In case of financial statement, he is responsible for, अगर मान लो फ्यूचर में शेड्यूल 3 बोलता है कि 3 इयर्स का इंफॉर्मेशन दो, 1920 भी दो, 2021 22 भी दो एंड 2021 भी दो. नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ मेनी इयर्स? 3 years. So that is the reason instead of writing 2 years they use the word called what? Each period. Crystal clear है? यहां तो कोई डाउट? ठीक है, ये तुम्हारी definitions है which I already discussed with you. One is relating to corresponding figures, one is relating to comparative information, one is relating to comparative financial. So I am leaving the definitions on you, just read it out once and you will be able to understand. अभी अपन चलेंगे मेन कोर स्टैंडर्ड पे. कोर स्टैंडर्ड क्या बोलता है? अब सुनो, you are going to give me a wrong answer now in the coming next 2 minutes. I will rectify you and you have to understand that कि why did you go wrong. क्योंकि जब हम कोई wrong चीज करके when we rectified it, it goes cemented in your head, it becomes permanent in your head. 2 conditions I am going to tell you. You are going to give me the answers on both the conditions, but be careful while giving the answers, right? Some of you may catch the point what I am trying to tell. Read the left side first. Whether the comparative information agrees with what? Amounts and disclosures presented in what? Prior period. पहली point क्या है? Can I say that you are able to smell 510 here? Why 510? It was talking about what? अब दोबारा से पढ़ो ये सेंटेंस को. Whether comparative information agrees with the amounts and disclosures presented in which year? तो क्या तुम ये ईयर की अच्छा लास्ट ईयर विच 2 years केम? इफ आई हैव टू आस्क यू लास्ट ईयर से फॉर एग्जांपल 2021 22 केम. दिस ईयर व्हाट विल कम? दिस ईयर व्हाट विल कम? 21 22 22 23. एम आई करेक्ट और नॉट? तो लास्ट ईयर इट वाज 2021 एंड 21 22. दिस ईयर 21 22 एंड तो अब पढ़ो सेंटेंस. नाउ रीड द सेंटेंस अगेन. वेदर the comparative information agrees, whether the comparative information agrees with the word amounts and disclosures presented in. अब तुम मुझे बताओ लास्ट ईयर में when 21 22 was the present year, last year 21 22 was the which year? At that point of time debtors were given 75 crores. How much given? When this year 21 22 figures will come, when it is last year now, is it going to be 75 crores again or you will change it?
इट विल रिमेन सेम, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हो गया, अनऑडिटेड और ऑडिटेड. यू कैन चेंज एनीथिंग आफ्टर द ऑडिटर, यू कांट चेंज. वही तो वो बोल रहा है सेंटेंस नंबर 1 में. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. रीड द पॉइंट अगेन. Wordings are little bit tricky and they're little bit technical, but unfortunately you all have to remember the wording as it is to score high in the auditing exam. मैंने तुम्हें day 1 को बोल दिया था, fight is not between the right and wrong answer, the fight is between good and better answer. तो अगर आपके आंसर को बेटर करना है तो you have to come out of your cocoon and you have to start understanding the technicalities which you have to use in your language. अभी language पढ़ो दोबारा से क्या होता है. मैं सिंपल तरीके से भी लिख सकता था कि लास्ट ईयर का बैलेंसेस शुड बी मैचिंग इन द करंट ईयर इन सिंपल शॉर्ट लाइन, बट दैट इज नॉट समथिंग इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एट इंटरमीडिएट लेवल. दे एक्सपेक्ट दिस लैंग्वेज. रीड द लैंग्वेज अगेन. वेदर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन agrees with the amounts or disclosures presented in prior period. Are you getting the point? कि मतलब लास्ट ईयर में जो प्रेजेंट ईयर था, लास्ट ईयर में which was a current year, and in the current year it became what? Last year. Figures should remain same. Disclosures amounts should remain same. And next point क्या लिखा हुआ है? That is, are the financial statements have been prepared in a which mode? Comparative mode. क्योंकि अगर लास्ट, देखो शेयर होल्डर इतना भी पागल नहीं है. लास्ट ईयर तुमने लिख दिया 75 करोड़ डेटर है, और दिस ईयर व्हेन यू आर कैरिंग फॉरवर्डिंग इट यू आर राइटिंग 72 करोड़. तो सम ऑफ द शेयर होल्डर्स आर वेरी क्लेवर. दे विल से दैट अरे लास्ट ईयर व्हेन यू शोड इट वाज व्हाट, दिस ईयर यू आर सेइंग व्हाट. कुछ तो प्रॉब्लम है. इट मींस टेल मी वन थिंग, आर द शेयर होल्डर्स हैप्पी विद दिस प्रेजेंटेशन और अनहैप्पी? तो who has to make sure that auditor shareholders should not go into that mode? Auditor. So I have to make sure that कि last year का amounts and disclosures presented in the prior period are properly carried forward in the current year, and are the financial statement has been prepared in the which mode? Comparative. Point number 1 sorted. Read the point number 2. Whether, ये हमने already पढ़ा हुआ है 510 में, से same language है. Whether opening balances have been forward to the current year without any, याद है हमने वही पढ़ा था MM. पहले मैंने 3 रैप करे थे, फिर 4 फैप करे थे. तो विदाउट एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर द लास्ट ईयर अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव बीन implied in this year what? Consider. Do we keep on changing our accounting policies, or it is required to be applied consistently? Tell me the 3 reasons when it can change. Statutory requirement of the law, standard is amended, fair presentation of financial statement. And if change, what is written? And if change, whether they are adequately treated, presented and disclosed. तो I can say that out of these 2 sentences में जो right side वाला sentence है, that we have simply copied from the which standard? 510. Only main thing you are going to do it in this standard is the left side वाला line. कि I have to make sure that कि when I am doing the corresponding figures, I am only responsible for the current year, but when I am doing the comparative figures, I am responsible for each period. ये याद रखना, ठीक है. Now this is what brings an end to your which procedures? Audit procedure. अभी अपना मेन स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा. सिचुएशन, इसको ध्यान से सुनना, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. आई विल सिंप्लीफाई इट फॉर यू. जस्ट रीड द हेडिंग. व्हाट इज हेडिंग? When the prior period financial statements were reported as what? Modified. मतलब लास्ट ईयर ऑडिटर ने क्या रिपोर्ट किया? मॉडिफाइड. पॉजिटिव और नेगेटिव. तो लास्ट ईयर ऑडिटर gave a which report? Negative report. Am I clear? Now read the next point. If the last year financial statements were what? Reported modified, the current year auditor detects that कि last year का modifications are still present in what? And are still what? Unresolved. अच्छा, what is the type of a management whom we call a good management? When do we call that a management is a competent, efficient and a good management? When the last year auditor already told them some negatives about the company, what do you expect next year? Should be there or should be eliminated? Or at least should be what? Reduced. So current year auditor तो वही expect करेगा ना. But actually what happened when the current year auditor was doing the audit? Read the point again. If the last year financial statements were reported what? Modified, the current year auditor detects that कि last year के जो modifications से they are still present in what?
and still what? That shows a poor indication of whom? Management. मतलब management did anything or did not do anything. So last year के modifications are getting carried forward in the current year and definitely they are impacting my current year financial statements. अब तुम मुझे बताओ, as a current year auditor मैं क्या करूं? Should I give unmodified report or should I also give the modified report? So that is 100% clear that कि you are definitely going to give a which report? अच्छा ये बताओ, अगर लास्ट ईयर के यहां पे मैं अन को निकाल दूं, यहां पे ये निकाल दूं, नाउ टेल मी व्हाट इज द लास्ट सेंटेंस रिटन? Are resolved. Are what? Resolved. That shows a good indication or poor indication. Then I may think of giving modified or unmodified. But when this word is written unresolved, that shows a poor management. It means current year financial statements are definitely getting what? Affected. अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अब पढ़ो. Read the point number 1. If such unresolved modification, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वहां से. If such unresolved modifications affect what? तब तो पक्का 120% I'll give a which report? Modified report. But तुमने याद है, we have done the 14 elements of the audit report. Tell me the first 4. Title, address, opinion. It means current year audit report में my opinion will be true and fair or not true and fair. But उसका reason कहां पे लिखेंगे? बेसिस में क्या लिखूं? मैं वही पूछ रहा हूं, बेसिस में क्या लिखूं? बेसिस में आई विल कॉपी पेस्ट दिस सेंटेंस. बेसिस में डू आई हैव टू गिव द रीजंस कि व्हाई आई एम गिविंग द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज व्हाट? मॉडिफाइड. तो व्हाट इज माय रीजन? कि लास्ट ईयर ऑडिटर gave the which report? His modifications are still present in the current year and they are still what? Unresolved and they are impacting my current year fund. This is the reason I am giving what? Modified. खत्म. देखो अपने को रीजन देना है तो रीजन ये आ गया, समझ में आ गया. बट मेरे को ये बताओ राइट साइड पे तुम्हारा क्या आंसर होगा? इफ सच अनरिजॉल्व मॉडिफिकेशंस डज नॉट अफेक्ट वर्ड, अब तुम क्या करोगे? मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड? गिव मी द रॉन्ग आंसर. आई वॉज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट सिंस लास्ट 5 मिनट्स. मॉडिफाई करोगे. इसका रीजन क्या दोगे? नहीं अम्मा, you didn't read the sentence properly. What is the sentence? Read. If such unresolved modification, they are still present in, and they are still what? Only problem is that does not affect my, मतलब वो मॉडिफिकेशन से मेरा करंट ईयर ऑडिटर अफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा. अब मैं क्या करूं? अब मैं अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे दूंगा. अभी भी मॉडिफाइड रिपोर्ट ही दूं? अरे क्यों भाई? सुनो 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 सुनो, लेट मी मेक इट वेरी स्ट्रेट टू यू. लास्ट ईयर के मॉडिफिकेशंस वर प्रेजेंट इन द एंड दे आर स्टिल व्हाट? अप टू दैट वी हैव अ कॉमन अग्रीएबल आंसर. इफ दे आर इंपैक्टिंग माय करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो डायरेक्टली जस्ट नाउ वी हैव डन ऑन द लेफ्ट साइड कि आई विल गिव आल्सो व्हाट? और बेसिस पैराग्राफ में आई विल राइट दैट रीजन. व्हाट यू विल डू इन दिस केस? स्टिल यू विल मॉडिफाई. आंसर क्या दोगे? प्रॉब्लम, दो इट इज नॉट अफेक्टिंग माई करंट ईयर, बट द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड और अनरिजॉल्व्ड. एंड द रीजन में क्या लिखेंगे? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इन द रीजन. नहीं, रीजंस में अपन लिखेंगे यू आर करेक्ट इन आंसरिंग मॉडिफाई द विच ईयर रिपोर्ट? करंट ईयर रिपोर्ट इन दिस सिचुएशन. बट बेसिस पैरामीटर में क्या लिखेंगे? द रीजन फॉर मॉडिफिकेशन that it was affecting what? Comparability of what? Financial statement. समझ में आ रहा है? Indirectly what you are saying was correct only. देखो क्या होता है, शेयर होल्डर को देखो, ऑडिटर इज नॉट ओनली गोइंग टू टेल द शेयर होल्डर वेदर इट इज अफेक्टिंग द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट. इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द शेयर होल्डर्स ऑल्सो कि हाउ बैड द मैनेजमेंट इज. चाहे वो अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, whether it is affecting my current year financial statement or it is not affecting my current year financial statement, both the side the answer will remain same. Modify the report, modify the report. But यहां पे रीजन क्या होगा? कि it was unresolved, present in the current year, affecting my financial.
that was a genuine reason. But what is the reason you are going to write here? The reason for my modification is not that it is affecting my current year financial statement. The reason for the modification is it is affecting what? Comparability of financial statement. So I don't want shareholders to start doing the comparison. And it means their comfort I have changed into what? Discomfort. And it means that is the reason I don't want to give a which report? Unmodified. I will again give a which report? Modified. But reason change हो जाएगा. तो दोनों के basis reason का comparison करो. What is the reason we are writing here? The reason for the modification is it was impacting and affecting my which year statement? Even though that is not impacting and affecting my current year financial statement, but it is definitely impacting what? Comparability. कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि मैं क्या शेयर होल्डर्स को क्या बोलूंगा कि लास्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट जो है मॉडिफाइड थी, करंट ईयर दोस मॉडिफिकेशंस आर स्टिल व्हाट? प्रेजेंट, दे आर अनरिजॉल्व्ड, प्लीज कंपेयर इट. Comparison takes place between the two wrong things or two right things. I have done my audit rightly, but last year ka audit is still what? Pending. Those modifications are what? Still pending. I cannot expect the shareholders to start doing what? Comparison. Because 1 year information is wrong and 1 year information is right. So that is not affecting my current year financial statement, but it is still affecting my what? Comparability. This is the reason you have to specify in the basis paragraph. Did you get the point? If I have to ask you whether this whole thing went inside your head, अभी हमने क्या किया? अगर तुम ये आईसीए के मटेरियल से पढ़ोगे या मैंने जो तुम्हें मटेरियल दिया ना पढ़ोगे तो योर आत्मा विल डेफिनेटली मीट विद परमात्मा ऑन द स्पॉट. ऐसे निकलेगी झूठ, हाँ खत्म. लेकिन अपने को क्या करना है? वी हैव टू ब्रेक इट इन अ प्रॉपर वे, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू ब्रेक इट इन अ प्रॉपर वे. अब बताओ शुरू में स्टार्टिंग में हुआ क्या? राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग व्हाट हैपेंड? लास्ट ईयर ऑडिटर गिव अ व्हिच रिपोर्ट? As a current year, while you were doing the audit, what you found is that last year ka modifications which were reported by whom? Last year auditor are still present in and they are still what? Unresolved. उसके बाद अपन दो पार्ट में डिवाइड किया. Affecting current year financial statement, not affecting current. But दोनों में answer will remain same. In both the cases, I am giving what? But what is the reason I am going to give here? It was affecting my current year financial statement. That's why I am giving a which result? But what is the reason I am going to give here? It was affecting not the current year, but it was affecting the comparability. Crystal clear है? कोई doubt है तो पूछो. नहीं? Situation number 1 is over. Now situation number 2 पढ़ो क्या है? Sub prior period financial statements were reported as was. अच्छा पहली में क्या था? इट वॉज रिपोर्टेड एज मॉडिफाइड. सेकेंड सिचुएशन क्या है? इट वॉज रिपोर्टेड एज व्हाट? अनमॉडिफाइड. इट मींस लास्ट ईयर का ऑडिटर हैज गिवन अ व्हाट? क्लीन ओपिनियन. बट नीचे क्या लिखा हुआ है? पढ़ो. एंड द व्हाट ऑडिटर? कहां गया? अरे बस कर मेरे भाई. एंड द करंट ईयर ऑडिटर डिड व्हाट? करंट ईयर ऑडिटर ऑब्टेन्स व्हाट? Audit evidence. And after obtaining audit evidence, what he found? What he found after obtaining audit evidence? एक तो आज एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, ये प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी. yes. Okay. अभी चल रहा है क्या? हाँ अब बोलो, अब बताओ. What the current year auditor is doing? Current year auditor obtains what? That कि last year audit report should have been modified. और मेरे पास उसका क्या है? एविडेंस भी है. अब बताओ यहां पे गलत कौन? करंट ईयर ऑडिटर और लास्ट ईयर ऑडिटर? मैं गया मैनेजमेंट के पास, डीडीआई करा. याद है डीडीआई? क्या डीडीआई? मैंने मैनेजमेंट से डिस्कस किया. मैंने कहा सर ऐसा है कि योर लास्ट ईयर ऑडिटर वाज अ डफर. ही हैज गिवन अ राइट रिपोर्ट और रॉन्ग रिपोर्ट. ही शुड हैव गिवन मॉडिफाइड, बट बाय मिस्टेक ही हैज गिवन. दिस इज द एविडेंस. अब मैनेजमेंट बोल रही है रोहित सॉरी वी कांट डू एनीथिंग. अब मैं क्या करूं? कैन आई इग्नोर दैट कि लास्ट ईयर ऑडिट हैज नॉट डन प्रॉपरली? क्योंकि लास्ट ईयर ऑडिट इफेक्ट्स व्हाट? करंट ईयर. और ये चेन विल कीप ऑन व्हाट? गोइंग until unless I will not stop it here itself only. Are you getting the point? So it means current year auditor again will give a which opinion? Modified. But यहां पे देखो current year auditor will either do what? Qualify, or you do what?
एक रिपोर्ट मिसिंग है। डिस्क्लेमर क्यों नहीं दे रहा मैं? भाई मेरे पास क्या है? ऑडिट। तो अगर मॉडिफाई में मेरे पास ऑडिट एविडेंस है तो आई एम लेफ्ट विद ओनली टू ऑप्शंस। व्हाट आर द टू ऑप्शन? आइदर क्वालिफाइड, और ये यही चीज अगर मैं तुम्हें फर्स्ट वाले केस में पूछूं, इन द अर्लियर केस इफ आई से आई एम राइटिंग मॉडिफाई द रिपोर्ट, मॉडिफाइड रिपोर्ट, हियर वेदर द थ्री ऑप्शंस आर कमिंग? यस, हियर व्हाट आर द थ्री ऑप्शंस कमिंग? एवरीवन प्लीज टेल मी। हियर आई कैन क्वालिफाई, adverse, disclaim. Here also I can what? Qualify, adverse और disclaim. क्योंकि यहां पे मेरे पास एविडेंस नहीं था, आई वॉज एबल टू सी दैट कि लास्ट ईयर मॉडिफिकेशन वॉज स्टिल प्रेजेंट इन करंट ईयर, बट यहां पे तो मेरे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है। दैट्स द रीजन आइदर आई कैन गिव वर्ड क्वालिफाइड और एडवर्स। बट स्टोरी डज नॉट एंड हियर। डोंट यू थिंक दैट द यूजर्स डिजर्व्स टू नो दैट कि लास्ट ईयर ऑडिटर वॉज डफर? तो कौन बताएगा? Management showed or management did not show this? So it is whose moral responsibility to display that? Auditor. तो मैं EMP यूज करूं या OMP यूज करूं? OMP. तो मैंने कौन सा पैराग्राफ यूज किया? He shall include which para? OMP and shall disclose the following. मेरे को उसमें तीन चीजें डिस्क्लोज करनी है। डिस्क्लोजर नंबर 1, last year audit was done by the predecessor audit, so that I can be safe. They should not think that कि I was a which year auditor? Last year auditor was Mr. X. Disclosure number 1. Disclosure number 2, last year audit opinion given. X has given a which opinion? Unmodified. But मेरे पास क्या है? Evidence कि he should have given modified. And what is the third? Last year का audit report date. So tell me, in the OMP paragraph, what attention I'm drawing the users towards? Last year audit was not done by me. It was done by predecessor auditor. He has given the last year audit report as a what? Unmodified. But rather he should have given modified. And third one, this is the date of his audit report. So that they can open their cupboards and all, wherever the last year audit report is there, they can see it. Are you getting the point? So it means in the situation number 2 mein, which paragraph is helping you? So without 706, you will not be able to understand 710. अब मैं तुमसे दो सिचुएशन पूछूंगा एंड आई एक्सपेक्ट अ वेरी गुड आंसर फ्रॉम योर साइड, ठीक है? एग्जाम में आएगा जैसे भी आता है, बट आई एम गोइंग टू आस्क यू, टेल मी, लास्ट ईयर ऑडिट वाज अ मॉडिफाइड एंड करंट ईयर ऑडिटर फाउंड आउट दैट कि लास्ट ईयर मॉडिफिकेशंस आर स्टिल प्रेजेंट इन द करंट ईयर, दे आर स्टिल व्हाट? अनरिजॉल्व्ड, बट इट इज नॉट अफेक्टिंग माय करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. व्हाट एन ऑडिटर शुड डू? Modify the report. Just because it is not affecting your financial statement, it means you will give unmodified? No, we will still give what? Modified. But what is the reason you are going to write in basis on? It was directly affecting my comparability of financial statement. और अगर मैं वही पूछूं, it is affecting current year financial statement, तो I will simply write कि it was unresolved and it was impacting my current year. That's the reason I also gave a which report? Modified. Of situation number 2, last year auditor gave the unmodified report. Which report? And I got the evidence today कि he should have given modified. I went to whom? अच्छा, वो वाला पूरा टॉपिक यहां पे हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि that is irrelevant. क्योंकि management also can't do anything in that. I just told you that कि you should do DDI, but there's no point of doing the DDI क्योंकि last year का audit is already what? Over. You can do anything or you can't do. ये तुम्हारी परमानेंट ऑडिट वर्किंग पेपर फाइल में डॉक्यूमेंट जा चुके हैं. इट इज समथिंग विच इज परमानेंट नाउ. यू कांट चेंज इट अंटिल एंड अनलेस एक्सट्रीम सिचुएशन कम्स. अब अपन क्या करेंगे? आई हैव एन एविडेंस, तो इट मींस आई विल आल्सो गिव व्हाट? मॉडिफाई. क्योंकि लास्ट ईयर का रिपोर्ट ही रॉन्ग है, तो हाउ कैन द करंट ईयर रिपोर्ट आई कैन गिव क्लीन? आई हैव टू डू व्हाट? मॉडिफिकेशन. बट मैं रीजन पैराग्राफ में क्या लिखूं? व्हाट शुड आई राइट इन माय रीजंस पैराग्राफ कि व्हाई आई एम गिविंग द मॉडिफाइड रिपोर्ट करंट ईयर? Last year auditor should have given modified. He has not given modified. That's why I do not expect that कि those balances which I am going to carry forward current year are rightly carried forward. That's the reason I am ending up giving a which opinion? Modified. लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए एक और पैराग्राफ ऐड कर देंगे. OMP में 3 डिस्क्लोजर करेंगे. बताओ. लास्ट ईयर ऑडिटर का नाम, that I was not the one, he was the one. Second thing, last year auditor given opinion, and third one, date of last year का audit report. My purpose is over here. अब situation number 3, the worst one. What is the worst one?
लास्ट ईयर नो ऑडिट टुक प्लेस, मतलब लास्ट ईयर ऑडिट ही नहीं हुआ। तीनों सिचुएशन समझ में आए? तो लास्ट ईयर ऑडिट ही नहीं हुआ तो मतलब मेरे ओपनिंग बैलेंसेस क्या है? नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज आई डोंट हैव समवन टू ब्लेम फॉर आल्सो नाउ, क्योंकि लास्ट ईयर ऑडिट हैपेंड और डिड नॉट हैपन, तो आई डोंट हैव एनी प्रीवियस ईयर ऑडिटर जिसके ऊपर पूरा का पूरा ब्लेम डाल सकते हैं अपन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब दिस इज कंप्लीटली अ नॉनसेंस थिंग और कंप्लीट इनकॉम्पिटेंसी ऑफ होम मैनेजमेंट। दे शुड हैव डन समथिंग बट दे डिड और डिड नॉट। अब तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लास्ट ईयर बैलेंसेस आर ऑडिटेड और अनऑडिटेड। अब क्या करें? अब समझ में आ रहा है? तुम्हें स्टैंडर्ड सोल्यूशन देता है। एक्चुअली स्टैंडर्ड्स गिव्स यू व्हाट विच यू आर गोइंग टू फेस इन फ्यूचर, और फ्यूचर में ऐसी सिचुएशंस आती हैं। दैट इज द रीजन ऑन द डे वन ऑल्सो आई टोल्ड यू चैप्टर्स आर नॉट गोइंग टू गिव यू द वर्थ। यहां पे कट करे तो क्या निकलना? स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स इतना दिमाग में होना चाहिए कि दिस इज व्हाट विल मेक यू a good professional chartered accountant. This is a situation, this is how you have to deal with it, and it will keep on increasing. You never know, maybe in the next 5 years, by the time you will be a CA, at that point of time number of standards from 36 may get increased to what 40 50 also. वैसे तो ICAI is reducing it, but I hope you all know about the proposed scheme now. When it is expected, anything you have an idea? अच्छा, what do you think, that proposed scheme is good or bad? प्रपोज स्कीम में देखो तुम्हारे को एप्लीकेबल नहीं है, बट आई थिंक यू पीपल विल एंड अप राइटिंग योर फाइनल अंडर द प्रपोज स्कीम। तो उसमें प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है कि यू कैन ज्वाइन द आर्टिकलशिप आफ्टर क्लियरिंग बोथ द ग्रुप्स नाउ। इन करंट सिनेरियो में यू कैन ज्वाइन द आर्टिकलशिप आफ्टर क्लियरिंग, बट देयर यू हैव टू डू इट आफ्टर क्लियरिंग बोथ। दैट यूज्ड टू हैपन इन आवर केस। हमारे केस में ऐसे ही होता था, बोथ ग्रुप्स क्लियर करो फिर करो। फिर उन्होंने क्या कर दिया, फर्स्ट ग्रुप, फिर फर्स्ट ग्रुप के बाद कर दिया आइदर ग्रुप, एंड अगेन दे केम बैक टू सेम प्लेस कि बोथ द ग्रुप्स। सेकंड बेनिफिट इज दैट इज नॉट अ बेनिफिट एक्चुअली, योर आर्टिकलशिप हैज बीन रिड्यूस्ड टू व्हाट, बट द प्रॉब्लम इज दैट 1/6 ऑफ योर आर्टिकलशिप यूज्ड टू बी योर हॉलीडे अर्लियर। तो मालूम है ये फैक्ट? 3 years का आर्टिकलशिप है ना, तो उसका 1/6 यूज्ड टू बी योर हॉलीडे, मतलब 180 days of holiday you can take in your 3 years of articleship. How many days? But now they have made it only 12 holidays in a year. Only how much? इसका मतलब in 2 years you can take maximum 24 days holidays with your chartered accountant. You cannot take more than what? 24 days. तो 180 days को reduce करके कितना कर दिया? These are the hidden facts no one is telling. Second, मैंने पूरा thoroughly पढ़ा इसे। उसके बाद मेरे को थर्ड प्रॉब्लम क्या लगी कि इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर 2 years ऑफ आर्टिकलशिप यू स्टिल हैव टू वेट फॉर 6 months टू राइट योर CA फाइनल। यू नो दैट इट मींस इनडायरेक्टली योर वेटिंग पीरियड बिटवीन योर इंटरमीडिएट क्लियरिंग एंड फाइनल इज 2.5 years। तुम आर्टिकलशिप के बाद पेपर नहीं दे सकते, यू स्टिल हैव टू वेट फॉर 6 months, and they are planning to conduct the CA examination for 3 times in a year now. और कर लो, है ना? अब तो रिजल्ट का वेट भी नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, एग्जाम देते थे, अपने मन को मारते थे, चलो एग्जाम चाहे गंदा भी गया तो मम्मा को अपन बोलते थे हाँ एवरेज गया, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट, इवन दो यू नो फ्रॉम इनसाइड कि हैव ऑलरेडी गॉन। क्योंकि आई थिंक यू आर द बेस्ट जज ऑफ योरसेल्फ। 5 o'clock व्हेन यू कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल यू ऑलरेडी नो दैट you are going to make it or break it. Am I correct or not? But still, all is well. All is well वाला dialogue बोलते हैं। और finally after 2.5 months when the result comes, you already knew your result, so you are not that shocked, but you will pretend to be in front of it. Oh, I was not expecting. ऐसा होता है ना? उसके बाद मदर फादर क्या होते हैं, they will feed pity on you and they will give you another 30,000. बेटा जा क्रैश कोर्स ले ले कहीं से। Are you getting the point? यही होता है। But I think now तो you can't wait for what result. If they will conduct it for 3 times in a year, 3 times होगा, 4 times तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। उतने में तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा नेक्स्ट डे नेक्स्ट अटेम्प्ट के एग्जामिनेशन। अगर 3 हो, वो CPT होता था एक टाइम पे 4 times आई थिंक देयर यूज्ड टू बी 4 times CPT एट आवर टाइम्स। तो एवरी 3 months को CPT होता था उस टाइम पे। You are तो doing foundation ना, before foundation there used to be
CBT, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो वो होता था 4 times in a year. और there are so many other ugly things also they have introduced. हाँ, one more thing, after getting qualified now you are not getting COP directly. तो एक काम करना, मेरे ऑफिस में आया ना, सीए बनने के बाद मेरे ऑफिस में आना, मैं तुम्हें 1 year का बफेलोशिप दे दूंगा. You work in my office like a buffalo. I will grill you, and after 1 year, when you will get a certificate, and you have to produce the certificate to the ICA. This CA has given me a 1 year of what experience certificate. After that, you will be allowed to become what COP. You cannot get the COP now from day one. क्योंकि actually क्या है? That is actually very nice initiative. अभी मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ. When I obtained COP in the year March 2013. I got qualified in January and I got the COP in the March 2013. But when I got the COP, I was not even aware of the fact that what to start and what to do, what not to do. Even though I did the 3 years of articleship, but when you become chartered accountant on your own, everything again goes blank. You don't know, and it takes minimum 1 or 2 years for you to understand that this is the market and you are a alone wolf in that market, and there are already so many competitors in the market who have already acquired the market. और तुम्हें उनके मुंह से छीनना है. It's a jungle outside. और जब तक तुम क्लियर हो जाओगे तो तब तक तो जंगल और थोड़ा बढ़ जाएगा. Are you getting the point? तो 2 to 3 years it takes for you to consume. Should I go in the COP? क्योंकि क्या होता है, a wrong decision will destroy your career. देखो, अगर मान लो तुमने रॉन्ग डिसीजन ले लिया कि लेट मी टेक अ सीओपी, लेट मी सेट अप अ प्रैक्टिस, बट यू डोंट नो, डोंट एक्सपेक्ट दैट कि फर्स्ट ईयर में तुम्हें 10 lakhs और 20 lakhs of income you will start getting. No, that is not going to happen. It takes time. Or if you have taken a wrong decision of COP in the first year and at the end of the year you realize, arey shit, I could have done a job. So by the time there's a 1 year of gap between your qualification and what? And that is a question they will ask you in the interview. What did you do in the last 1 year? That is also negative. Are you getting it? So it is a very wisest decision. They are saying that when you will do the work under a CA firm, obviously you will get paid. हम लोग free में नहीं, आपको stipend नहीं मिलेगा, आपको salary मिलेगी. Minimum 40-50,000 rupees. ऐसा करके we will be giving you the salary. Good thing is that with the earning only you will be able to decide after 1 year, do you want to become a practicing CA or you want to become a employed CA. So that is a good thing. It means you are not losing your financial stability. ठीक है ना? And you will be, and that experience will be counted as a job when you will sit in an interview even after 1 year. It will be counted as a job. So good thing is that is very positive thing which the ICA thought. This is my perception. This is the reason I say. I think this is only the justified reason why I say introduce this. But मेरे को वो समझ में नहीं आया कि why they have introduced after 2 groups वाला concept. क्योंकि 2 groups का concept समझ रहे हो, आपको दोनों group clear करने पड़ेंगे, then only your articleship will start. And there are 80% of the students who goes into the articleship planning to do the group wise papers. इसका मतलब you are already deferring your articleship by 6 months. And after completing your articleship also you need to wait for what 6 months. तो इसका मतलब indirectly वो कितनी होगी 3 years. But तुम्हारा 180 days का holiday period has been reduced to what 24 days. That is the negative point. Is it correct or not? समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो मैं there is nothing wrong if you are clearing CA group wise. I will suggest that कि those people are fool who think that कि I can clear both the groups at one point of time, but actually they know from inside they can't. If you know from inside you can't, better go with what? One group. But decision to be taken at the right time. अब तुम ये decision अक्टूबर में नहीं ले सकते कि should I go or not. This decision has to be there in your hands by the month of July. तो जुलाई में तुम्हें डिसाइड हो जाना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी ओवर बाय दैट टाइम एंड यू शुड बी इन अ पोजीशन टू टेक अ कॉल कि शुड आई गो फॉर बोथ और शुड आई गो, बट यू नीड नॉट वरी. तुम्हारा वाला आर्टिकलशिप फर्स्ट ग्रुप वाला ही है. आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर स्टूडेंट, बट यू विल एंड अप गिविंग द एग्जाम अंडर द न्यू सीरीज, right or not? And these are proposed changes
तो डोंट गेट कैरिड अवे बाय दिस टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल, हर जगह यही बकवास चल रही है। हर रोज एक वीडियो, एक छोटा सा पिन आता है, उसके ऊपर 100 वीडियो बन जाती हैं, फिर पिन आता है, फिर 100 वीडियो। अल्टीमेटली आइडिया इज इट इज प्रपोज्ड रेजोल्यूशन। विच रेजोल्यूशन? अभी तक कुछ भी नहीं है। यू डोंट हैव टू गेट कैरिड अवे कि मेरे को 6 पेपर्स होंगे या 8 पेपर्स होंगे, मेरी आर्टिकलशिप 2 years हो गई थी। अननेसेसरली आई एम गेटिंग फ्लडेड विद द व्हाट्सएप मैसेजेस एंड कॉल्स कि सर इसका क्या इंपैक्ट होगा। मैंने कहा मेरे को क्या मालूम भाई, अब मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, ऑडिट, लॉ। उसके बारे में डाउट है तो टेक्स्ट करो, नहीं तो नको करो। अब मैं क्या करूं भाई? मेरे को पूछ रहे कहते, मैंने कहा मैं आईसीए नहीं हूं, मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज का सीसी मेंबर भी नहीं हूं, मेरे को क्या मालूम है इसका क्या इंपैक्ट। आई कैन जस्ट टेल यू माई ओपिनियन, आई कैन टेल यू टू ऑफ फॉर दिस और नॉट टू ऑफ फॉर दिस। सर हम क्या करें, हम सीए छोड़ देंगे, थोड़ा पेंडिंग कर लेंगे। मैंने कहा पेंडिंग वेंडिंग क्या होता है भाई? अभी नवंबर 2023 दे माइट बी थिंकिंग दैट इट विल कम फॉर द न्यूज। तो बाय दैट टाइम आई डोंट थिंक सो दैट यू वुड लाइक टू हैंग ऑन टू इंटरमीडिएट लेवल ओनली टिल व्हाट, नवंबर 2000। इतने तो बेशर्म नहीं लग रहे तुम। तो मेरे ख्याल से दिस शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट और लास्ट एग्जाम। अटेम्प्ट छोड़ो, कन्वर्ट द अटेम्प्ट इनटू व्हाट, एग्जाम। अपना एग्जाम लिखो, मस्त अपना आर्टिकलशिप ज्वाइन करो और यू विल बी बेनिफिट। तुम्हारा अगर आर्टिकलशिप 3 years वाला हुआ ना, गुड थिंग इज 180 days हॉलीडे। तो ये तुम्हारे अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए टू इंक्रीज, अदरवाइज 24 days, है ना। 24 days का मतलब क्या है? अब मैंने क्या किया था, आई टुक ऑलमोस्ट लास्ट 7 months आई टुक द हॉलीडे from my articleship. Last 7 months I didn't go to my articleship in the last 7 months. Why? 1 month जो मैंने extra holiday लिया था, that I did it after getting qualified, after writing the exam, because between the exam and result there is a what, 2.5 months gap. तो उस टाइम पे तुम compromise कर सकते हो, but never ever target the big firms or too big firms for articleship. Take the wisest decision of joining the medium sized firms. वो फॉर्म में जाओ जहां पे 3-4 पार्टनर हो एंड दे डू एवरीथिंग, लाइक अकाउंटिंग भी करते हैं, ऑडिटिंग भी करते हैं, एनसीएलटी वर्क भी करते हैं, आरओसी वर्क भी करते हैं। यू विल गेट एन एक्सपोजर ऑफ एवरीथिंग। बड़ी बड़ी फॉर्म्स, ये जो बिग 4, मैकेंजी, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, इसमें जब अपन जाते हैं ना, वी हैव अ स्टैम्प ऑन आवर शोल्डर कि यस वी हैव डन आवर आर्टिकलशिप फ्रॉम अ वेरी बिग 4, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी एक्सपर्ट इन वन एरिया, बट यू विल नॉट बी हैविंग नॉलेज इन व्हाट अदर। और बाय मिस्टेक अगर तुम इंटरव्यू में बैठ गए, मान लो तुमने 3 साल सिर्फ इंटरनल ऑडिट किया डेलॉयट में, तो यू आर सुपर डुपर एक्सपर्ट इन व्हाट, इंटरनल। लेकिन अगर पोजीशन स्टैट्यूटरी की है तो, या अगर पोजीशन फाइनेंस की है तो, अकाउंटिंग की है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी वर्स सिनेरियो। सो मेरे ख्याल से यू शुड डू एंड टेक द वाइजेस्ट डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग द मीडियम साइज फर्म, क्योंकि बीइंग अ प्रैक्टिसिंग सीए आई नो दैट कि व्हाट स्टूडेंट्स गो थ्रू। क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 5 generations मैंने देख ली हैं ऑफ द 3 years each who have already gone and passed through my articleship मेरे अंडर। तो आई नो दैट व्हाट डू दे फेस एंड ऑल दोस थिंग्स। मैंने देखा है इन माय ऑफिस सम ऑफ द स्टूडेंट्स कम who have done the 1 year articleship in Deloitte, they gave the resignation there and then they come to the medium size firm. So take a call very wisely, क्योंकि ये जो 5 years है ना, it will keep on increasing only with the wrong decisions every time you are going to take. Already हम लोग 5 साल दे रहे हैं. I don't think so that you would want to wait for more than 23 years of your age to become a chartered. I think almost you are 19, 20 right now. 18? Don't tell me कि minor भी है क्लास में कोई है तो बताओ, बताओ बताओ, कोई है माइनर क्लास में? अरे हाथ खड़ा करो, कौन है माइनर? तुम माइनर हो? सीरियसली? तुम आराम से सो घर पे। और कोई माइनर है इधर अपना लॉन्डो में? अरे एक जना बोलो कौन है, कौन है माइनर? ओ माइनर दिख रहा है, तेरे से ज्यादा बाल है मुंह पे। ओ दाढ़ी करेगा ना तेरी डबल विग बन जाएगी। तो माइनर दिख रहा किसी एंगल से? नाम क्या बेटा तेरा? हाँ देखो कितना वजन है आवाज में, माइनर लग रहा है। और कौन है माइनर? पीछे है कोई माइनर?
नहीं एक्चुअली अगर माइनर होता ना मैं थोड़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन पूछने वाला था। यू आर अ माइनर, कितना ईयर्स अम्मा? तो तुम क्या कर रहे हो? एनी एग्रीमेंट एंटर्ड विद यू इज व्हाट? व्हाई डेफिनेशन? तुमने एकेडमी को पैसे दिए? पागल हो तुम। हाफ पेमेंट करना था। व्हेन दे विल आस्क यू द रिमेनिंग हाफ, आई एम तुम मेरे से पैसे नहीं पूछ सकते। चलो फिर तो अम्मा बहुत टाइम होगा तुम्हारे पास। अभी तो 17 ईयर्स में तुम इंटर में, हमारे टाइम पे किस्मत ही खराब थी। हमारे टाइम पे ग्रेजुएशन के बाद सीए कर सकते थे तुम। इनको अच्छा है 10th के बाद ही स्टार्ट कर लिया था। 10th के बाद यू स्टार्टेड मतलब you can write the exam obviously after 12th but you might have registered after 10th or what? तो तुमने इंटरमीडिएट कब कर ली? तो भैया यू हैव अ चांस टू बिकम द यंगेस्ट सीए। अच्छा सीए में, हाँ ऑलरेडी है क्या? पागल होते हैं वो। 19 साल में कोई सीए बनता है? अच्छा अगर वो 19 ईयर्स में सीए बन भी गया ना, ही स्टिल हैव्स टू वेट फॉर 2 ईयर्स टू गेट हिज नेम एनरोल्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। क्योंकि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का रूल है यू नीड टू कंप्लीट द एज ऑफ व्हाट? 21। तो बेटा तुम तो 17 हो, तो अगर तुम बाई चांस 22 में सीए बन भी गई तो तुम्हें, अच्छा 20 सॉरी 19 में सीए बन भी गई या 20 में बन भी गए, यू नीड टू वेट फॉर व्हाट? तो मेरे ऑफिस में आया तो मैं तुम्हें 1 ईयर की जॉब दे दूंगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है? चलो एनीवेज, अरे हम लोग पागल लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं। हम लोग अभी तक तो स्टैंडर्ड भी हो जाता ना। मैं कारो स्टार्ट करना है मेरे को, जल्दी बताओ कहां पे थे अपन? थर्ड पे। व्हाट इज द थर्ड एरिया? लास्ट ईयर ऑडिट टुक प्लेस और नो ऑडिट टुक प्लेस? तो भैया कंपनी क्या हुई ऑडिटर के पास, सर 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 लास्ट ईयर ऑडिट हैज नॉट टेकन प्लेस। तो ऑडिटर बहुत बढ़िया, अभी आपका स्वागत करेंगे पान पराग से। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब सुनो, इन सच केस क्या होगा? इन सच केस करंट ईयर ऑडिटर विल अगेन टेक द हेल्प ऑफ विच पैराग्राफ एवरीवन? ओएमपी। क्योंकि देखो सर, ये शेयर होल्डर्स को बताना बहुत जरूरी है कि ऑडिट इज ऑप्शनल और मैंडेटरी, बट द मैनेजमेंट डिड दैट और डिड नॉट डू। तो हु विल टेक अप दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल देम? ऑडिटर। तो ऑब्वियसली विल टेक द हेल्प ऑफ व्हाट? ओएमपी एंड शेल डिस्क्लोज द फॉलोइंग। अब सुनना ध्यान से, मैनेजमेंट मेरे को बोल रही सर 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 लास्ट ईयर का ऑडिट नहीं हुआ 2021 का, एंड फॉर 2021-22 यू आर द ऑडिटर। तो अभी क्या करें? मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं 2 साल का ऑडिट कर देता हूं। लेट मी डू द ऑडिट ऑफ व्हाट? गिव मी द 2 years ऑडिट फीस। क्या बात कर रहे हैं सर, 2 साल का ऑडिट फीस एकदम से कैसे देने? मैंने कहा फिर मत करवाओ सीधे, बिकॉज नथिंग इज फॉर व्हाट? फ्री। मैं ऐसा थोड़ा 2 years का ऑडिट कर लूंगा और 1 year की ऑडिट फीस लेके मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि पप्पा गए फ्री में करके आ गए? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो I will not do the audit for how many years? 2 years. It means I'm going to be responsible only for the audit of what? Current year. But biggest challenge is what? कि last year का closing balances are what? Unaudited. And they are going to be my current year का which balances? And unaudited balances are definitely going to affect your what? Current year financial statement. इसका मतलब indirectly little bit of burden raises on your shoulder. They are not ready to pay you the 2 years and you can't do the 2 years. तो ICA ने एक solution निकाला. What is the solution? First of all, ICA बोलता है don't do anything, just simply include one para. What is the name of the para? OMP para में सबसे पहले तो declaration दो. What is the declaration number 1? Last year no audit of financial statement taken. ताकि shareholder should what do you say, be angry on what? Company कि why didn't you do the last year audit? Why didn't you get the last year audit done with a practicing CA, right? That is a point number 1. But point number 2 क्या लिखा हुआ? Read it and let me know. Read it and let me know. What is written? He has obtained SAAE that कि opening balances does not contain any misstatement that materially affects the which year? इसका मतलब ICAI का बोलता है एक काम करो, out of courtesy don't do the full year audit last year का, just do the audit of which balances? Opening balance. Are you getting the point? Just do the audit of which balances only and get an evidence
which shows to the users that कि the opening balances are not affecting MM. What is MM? And they're not affecting my which year? Remaining 90% of the audit, you leave it. Now, once a gap, always a gap. Keep the gap open, but little bit do the audit of which balances? तो भाई वो भी मैं OMP में, because I want to become hero in the eyes of shareholders ना, तो I have to tell them कि I took money only for 1 year, but I still did the audit of last year का which balances? Closing, which are my current year what? Okay. So read the point again. What he is doing? He has obtained SAAE, that कि opening balances do not contain any misstatement that materially affects our current year financial statement. This is where the OMP helps you when the last year audit is not done. With that, our which series is over. तो भैया 700 सीरीज में हमने 5 स्टैंडर्ड कर लिए सुपरबली. व्हाट आर द 700 स्टैंडर्ड? 700, 701, 705, 706. और इससे पहले कौन कौन से स्टैंडर्ड हो गए अपने? 200, 210, 230, 300, 320. उसके बाद 500, 501, 505, 510. फिर 550, 560, 570 एंड 580. टोटल करना कितने हो गए भाई? 6, 5, 5 plus 5, 10, 10 plus 3, 13 plus 8, 18 standards on auditing out of 26 which you have in your portion. We are already done. इसका मतलब अपने पास सिर्फ 80 स्टैंडर्ड बचे हैं. कौन से? एक बचा अपना 530 ऑडिट सैंपलिंग, फिर बचा 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ये अपने को 2 चैप्टर्स है, तो चैप्टर्स मीन स्टैंडर्ड, दे आर गोइंग टू बी मिक्स्ड इन दैट. फिर अपना बचा 315. व्हाट इज 315? रिस्क असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क. तो दैट इज कॉल्ड 315. क्योंकि 300 सीरीज में अपना सिर्फ 315 इज पेंडिंग. आई थिंक 300 ओवर ना, 320 मेटीरियलिटी ओवर, 330 नॉट देयर इन योर पोर्शन, तो ओनली लेफ्ट इज व्हाट? 315. फिर अपने को 600 सीरीज में ओनली 1 स्टैंडर्ड इज देयर, 610. वो भी अपन वही चैप्टर में कवर कर लेंगे, ठीक है ना? दैट बिकॉज इंटरनल ऑडिट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन चैप्टर कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. तो 4 तो यहीं पे कवर हो गए. और क्या बचा फिर? हाँ, फिर 220 क्वालिटी कंट्रोल बचा, फिर बचा 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, 299 एंड 240. दीज आर द टोटल 8 स्टैंडर्ड्स ओवर. अभी अपन क्या करेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड्स को देंगे ब्रेक, क्योंकि स्टैंडर्ड्स हमने बहुत ज्यादा कर लिए. अभी अपने को फिनिश ऑफ क्या करने हैं? चैप्टर. तो दिस चैप्टर इज नॉट येट ओवर. एक्चुअली द चैप्टर is 80% over. 20% the extra thing which you will find in the audit reporting chapter is called Caro Report 2020. What is the name of the topic? देखो यहां पे अपने पास 2 चॉइसेस हैं कारो करने की. You tell me what you want. Caro is also an audit report. So we are in the flow of learning what? Audit reports. So I wanted Caro to be done here, but actually the section number for the Caro is 143 subsection 11. What is the number? It should actually be the part of your company audit chapter. Which chapter? तो मैं क्या करता हूं, एक काम करते हैं, अभी अपन कारो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एंड along with that, after that we'll start a chapter called what? Company. The biggest chapter of all. तो उसको अपन फिनिश कर देंगे, ठीक है? तो उसके बाद तुम्हारे छोटे छोटे चैप्टर्स रह जाएंगे. दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल रिव्यू, रिस्क असेसमेंट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, audit in different entities and audit of different items, and what do you say, fraud and responsibilities, and कौन सा? वही 7-8 छोटे छोटे चैप्टर रह जाएंगे. दे आर नथिंग बट द स्टैंडर्ड्स. तो नाउ आई एम गोइंग टू डू व्हाट? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट? कारो 2020. ठीक है, 1:30 तक क्लास है आज, क्योंकि तुम्हारी नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट एट व्हाट? 2:30. सो यू विल गेट द सेम 1 hour ब्रेक. यू डोंट नीड नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है? बिकॉज कारो में अपने को थोड़ा सा टाइम लगेगा. टुडे इज हाफ एन आवर एंड टुमारो इज ऑलमोस्ट फुल क्लास, एंड डे आफ्टर टुमारो's first 15 minutes means this topic itself only deserves almost 2.5 hours. So you have to be very much diligent in this particular topic. And one more thing, this is a complete amended topic. Complete amendment है, because before you it was Caro 2016. What was the topic? But अभी recently क्या हो गया?
और लॉ में तुमने पढ़ा नहीं है ये, क्योंकि सर टोल्ड आई थिंक टू यू इट विल बी कवर्ड इन व्हाट, ऑडिट। तो वो चीज सेक्शन नंबर 143(11) अपन कहां पे कवर कर लेंगे, यहां पे कवर करेंगे, ठीक है। अभी देर इज वन मोर शीट आई एम गोइंग टू एड in your what do you say basket of that Google Drive, ठीक है, and that sheet is going to be known as audit and auditors. What is the name of the sheet? मैं तुम्हें पहले दिखा देता हूं, एक सेकेंड। Yeah, this is what audit and auditors. Yeah. ये पूरा कार्य हुआ है, हाँ यहां से स्टार्ट होता है। सो द नेम ऑफ द शीट इज नोन एज ऑडिट एंड ऑडिटर्स। बेसिकली दैट इज योर लॉ का चैप्टर ना, लॉ के चैप्टर का नाम यही है ना, ऑडिट एंड ऑडिट। तो आई एम गोइंग टू पुट इट इन योर, वेयर इज दैट, ये रहा नीचे, ठीक है। सो वन मोर फाइल इज एडेड, आई थिंक इट शुड बी एटलीस्ट 10 to 11 फाइल्स विद यू नाउ, ठीक है। ऑडिट एंड ऑडिटर्स, this is one file, and what is another file just now I added, this one. चलो, what is the topic now we have to start? पहले इसका बैकग्राउंड समझेंगे, then only we will understand, ठीक है। First of all, this chapter you have already done in your law. The name of the chapter was audit and auditors, ठीक है। पहले अपन क्या करेंगे, थोड़ा सेट